अस्सलामुअलैकुम माय माइंडफुल कम्युनिटी ऑल अराउंड द ग्लोब। अभी हो रहे हैं 8:58 और मैं ऑनलाइन आ चुकी हूँ लाइव विद अनदर सोलफुल सीरीज प्रोग्राम। आई आई I missed you guys like anything this past week because कुछ एक दो इवेंट्स की वजह से कोई एक तो कुछ अनफॉर्चुनेट से इवेंट्स हो गए थे विद इन द फैमिली, जिसकी वजह से मुझे डिले करना पड़ा, लास्ट पोस्टपोन करना पड़ा लास्ट वीक्स संडे सोलफुल सीरीज, एंड इट वाजंट अ नाइस थिंग टू डू फ्रॉम माय एंड, और बहुत प्लेजेंट भी नहीं था मेरे लिए। मैं थोड़ा अपसेट भी थी, बट देन I had to do it because I wasn't able to make it to the studio in time. But we're back this week, alhamdulillah, and we're doing superb, mashallah. Mentoring Hub has been soaring. Our team has been soaring. So we're all positive, pumped up. So you guys have your popcorns ready. एंड हाउ हैज बीन योर वीक? मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए कि मूड एलिवेटर पे आज मेरी कम्युनिटी का मूड कैसा है, आप लोग कैसा फील कर रहे हैं। मुझे पता है कि गर्मी जो है वो जरा ज्यादा हमें तंग कर रही है और बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। we've had a lot of viruses traveling around, so अलावा कोरोना के, अल्लाह करे सब उससे बचे रहे। फिर देन स्कूल का खुलना। हेलो अस्सलाम वालेकुम महविश, आई होप मैं बिल्कुल ठीक हूँ महविश। आई होप यू मिस मी एज मच आई मिस्ड यू गाइस, बिकॉज मैंने बहुत मिस करा इस पास्ट वीक। और आप लोगों को पता है कि मैं जो हूँ वो इतना इतना इंतजार करती हूँ इस लाइव का कि मैं सोची थी अल्लाह, सो ये 1.5 हफ्ता मेरे लिए जरा ज्यादा थोड़ा सा मिसी ब्लू ही था। तो मैं ठीक हूँ। महविश, आप मुझे बताइए आप कैसी हैं और आपका मूड एलिवेटर पे मूड कैसा चल रहा है, ये वीकेंड पे मूड कैसा रहा। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि जो है सब लोग जो है वो स्टफ नोज, बुखार, so much of flu around. I've had a lot of friends and family and colleagues who've been down this week and this past week, so I wish everybody getting well soon. So आप लोग सब लोग जल्दी जल्दी मैसेजेस करिए। महविश, आप कह रही हैं कि आपने भी मिस किया था, थैंक यू सो मच बिकॉज आई मिस्ड यू गाइस टू। एंड वीकेंड नहीं है महविश, वीकेंड क्यों नहीं है? हाँ, आप लोगों का वीकडे शुरू हो गया। एक्चुअली महविश अयाज जो है वो हमें ज्वाइन करती है मिडल ईस्ट सऊदी अरेबिया से, इस वजह से आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि आप लोगों का तो हफ्ता शुरू हो जाता है ना, और हम लोग जो है वो संडे को रिलैक्स करते हैं और मंडे से शुरू करते हैं। तो हाँ, आपका तो वीकेंड गुजर गया, पर आई होप महविश कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी मैसेजेस करने हैं कमेंट बॉक्स में और हमें बताना है कि आप लोगों का हफ्ता कैसा गुजरा और ये वीकेंड कैसा रहा। फायर क्रैकिंग था, ड्रम रोल्स थे, नहीं थे, और क्या चला। आप लोग जैसे हमेशा देखते हैं कि स्क्रीन पे हमारे साथ फील वर्ल्ड वाइड हमारे साथ लाइव होता है, बिकॉज वो हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के डायरेक्टर मिस्टर अरबाब नसीबुल्लाह, जिनके साथ हम बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं। तो जल्दी से, इससे पहले कि हम आज के अपने माइंडफुल कम्युनिटी मेंबर को ऐड करें स्ट्रीम में, 2 3 4 चीजें जो है वो मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो ये कि हमने अपने माइंडफुल स्किल्स डेवलपमेंट क्लब के फर्स्ट फेज ऑफ मेंबरशिप को क्लोज किया और उसके बाद हम उस पूरे प्रोसेस में पड़ गए जिसमें हमने शॉर्ट लिस्टिंग की, और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद वी हैड an entire wing that's created across Pakistan and also globally, internationally, जो हमने पहले भी कहा था। और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू वीक्स में अनाउंस करने जाएंगे अपना पहला वर्चुअल मीटअप सारे मेंबर्स के साथ, जिस मीटअप के अंदर इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपर्ट भी पार्टिसिपेट करेंगे। सारे के सारे एक्सपर्ट्स, तो बड़ा मजा आने वाला है। उसके अलावा मेंटरिंग हब ने मास्टर क्लासेस का एक बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हम लेकर आ रहे हैं अपने इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपर्ट्स के साथ। उसके लिए भी आप लोगों को स्टे ट्यून रहना पड़ेगा। देयर इज अ लॉट हैपनिंग एट आवर एंड। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि कुछ हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह और बहुत सारी बज़ आने वाली है स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को लेकर। महविश, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ कंटिन्यूड आज रहिएगा, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो और बाकी सारे प्रोग्राम्स से बहुत ही डिफरेंट है। जी हाँ, डिफरेंट इस वजह से क्योंकि जिस एक्सपर्ट को आज हमने दावत दी और जिनको हमने रिक्वेस्ट की कि वो आए हमारे साथ ये प्रोग्राम करें, वो एक्सपर्ट जो है आज जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो है मिथ बस्टिंग चीजें,
जो कि सराउंड करती हैं मार्केटिंग को लेके, डिजिटल मार्केटिंग को लेके, सोशल मीडिया को लेके। आजकल जब हम पोस्ट कोविड अपने बिजनेसेस को, अपने आप को अपस्किल करना चाह रहे हैं, अप स्केल करना चाह रहे हैं, किस एक्सपर्ट के पास जाएं, किस एजेंसी के पास जाएं, किसके पास जाएं जो हमारी बात समझ ले, हमारे पैशन को, हमारे विजन को रेप्लिकेट कर सके हमारे लोगोस के फॉर्म में, हमारे एड कैंपेन्स के फॉर्म में। ये बहुत बड़ा और बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे हैं, जो कि फेयरली इतने ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं होते मार्केटिंग को लेके या सोशल मीडियम्स को लेके, और उनको कोई ना कोई हेल्प, सपोर्ट और इनकरेजमेंट चाहिए होती है, और ताकि उनके आइडियाज को कोई समझे और फिर स्क्रीन पर ला सके, ताकि ब्रांड की आइडेंटिटी, उनके बिजनेसेस की आइडेंटिटी, हमारी अपनी आइडेंटिटी और कहानी हम बेहतर बना सके। सो इस वजह से आज जो गेस्ट है उनको, उनसे भी मैं, अब वो गेस्ट नहीं है वैसे, वो हमारे नेशनल बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स का माशाल्लाह से पार्ट भी बन चुके हैं। आज वो भी अनाउंसमेंट है हमारी, तो मैं आज और बहुत ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज माशाल्लाह दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड अगेन फॉर मेंटरिंग हब। और साथ साथ हमारे मास्टर क्लासेस के अंदर भी हम इनके, ही इज गोइंग टू बी डिलीवरिंग a very very जबरदस्त एलिमेंट ऑफ मास्टर क्लासेस एज वेल, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और चीजों को लेके होगी। तो आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना है, हमारी अनाउंसमेंट्स भी सुननी है, और महविश बहुत क्लोजली सुनिएगा। वो सारी खवातीन, वो सारे यंगस्टर्स जितनी भी हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं और दोबारा रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीन से जुड़े रहिएगा और कहीं इधर उधर मत जाइएगा, क्योंकि अब ये एक्सपर्ट की बातें बड़ी मजेदार होने वाली है इंशाल्लाह, एंड यू गाइस आर गोइंग टू एंजॉय। बिफोर आई ऐड हिम टू द स्ट्रीम, अस्सलाम वालेकुम शहजाद, you're from गुजरांवाला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपका। नगमा भी मेरे ख्याल से हमें ज्वाइन करेंगी अभी, और बहुत सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं, सो मैं वेट कर रही हूँ। और बाय द वे, वैसे मैं सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 9 PM कराची का टाइम है, ये खास तौर पे पाकिस्तानी टाइम जो है, नेशनली जो हमारे फॉलोअर्स हैं उन लोगों की रिक्वेस्ट पे ही रखा जाता है, क्योंकि सब कहते हैं कि जोरा 9 o'clock is a time where we can sit glued to the screen and watch the show. So अब मैं आप लोगों को मिलवा देती हूँ अपने एक्सपर्ट से, और फिर क्यों ना ऐसा करें कि उनसे ही उनका इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बुरहान? ठीक ठाक ज़रा, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया for taking up the request and joining us for the live session. अच्छा, थैंक यू सबको फॉर मैं हैविंग एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये हमेशा कैमरे के पीछे होते हैं, ये डायरेक्टर साहब हैं, ये प्रोड्यूसर साहब हैं, ये कंटेंट डिजाइनर हैं, ये सारा जो है वो सारा इम्पोर्टेंट काम जो है ना, वो बुरहान साहब करते हैं। स्क्रिप्ट के ऊपर सारी लुक क्या आनी है, एड्स कैसे होने हैं, कैसे नहीं होने, ब्रांड्स के लिए, कंपनीज के लिए, तो माशाल्लाह ही इज बीन डूइंग अ लॉट। बट मैं अब कम बोलूंगी, और मैं बुरहान को रिक्वेस्ट करूंगी कि बुरहान, आप जो है वो सबसे पहले तो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर ट्रांजिशन from the time that you were planning to start a career. उस वक्त what was going through Burhan's mind, and did you actually end up doing the same, or were there different things that happened then? First of all, thank you for having me, and thank you for the nice description and introduction. Who am I and how did I start my journey? I think it goes back to O levels. That's when the very first time I was exposed to business studies. And business studies के अंदर एक Wow. बड़ा अच्छा सा टॉपिक था मार्केटिंग का, जहाँ पे 4 P's of marketing पढ़े थे. So at that point, those concepts and those theories, that started making a lot of sense to me. So what I did was, when I started my A levels, I took the same courses again: economics, business studies, and accounting, and I got more detailed. I dived deep into it. बिजनेस स्टडी से थोड़ा सा बिजनेस Okay. समझ आता था, इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा समझ आता था कि किस तरीके से दुनिया चलती है, किस तरीके से पैसे बिल्कुल। बनाए जाते हैं, कि हाउ इंडस्ट्रीज वर्क. And that's the reason why, when I did my A levels, after that I decided, initially my mother wanted me to be an accountant, but I did not feel that I was
good in that domain. So before she decided कि मैं तबानीस के अंदर मेरा एडमिशन हो जाए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं बैचलर्स करना चाहता हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में. So she was very open to the idea. I did my BBA, and right after I did my BBA, the very first job that I got myself into back in 2012 was into a digital marketing agency. और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ना उस पॉइंट के ऊपर 2012 के ना इतना कॉन्सेप्ट था नहीं, क्योंकि इट वाज अ वेरी न्यू थिंग इन द मार्केट. एवरीवन वाज वेरी कंफ्यूज्ड वेदर this is an industry that is going to grow, because at that point the industries which are very finely balanced were people who belong to the medical career, people who belong to the engineering background, जो कि accountant हैं, जो कि बैंक में काम कर रहे हैं. तो थोड़ा सा रिस्क लिया था बिकॉज इंटरेस्ट था वहाँ पे, बट अल्हम्दुलिल्लाह दैट रिस्क पेड ऑफ. एंड एट दैट पॉइंट आई टुक अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क बिकॉज द वे technology was developing, like if I talk about it from when I was a child, कि मैं बचपन के टाइम में गाने सुनता था तो मैं कैसेट्स पे सुनता था, और जब तक मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आया था तो मुझे लाइक कैसेट की ज़रूरत नहीं थी. अब मैं इंटरनेट पे नॉर्मल गाना डाउनलोड करके लाइक मैं सुन सकता हूँ, मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ उसको ऑन द गो. So the way technology was revamping, I thought it might be a very good move, and that's how I got into digital marketing. So Alhamdulillah, from 2012 till now, I have been in the same field. I worked for the first 6 years of my life. From 2012 till 2017, I worked in two different agencies. Mashallah, say, I started off from the very bottom of my career, as an intern, and within a span of 6 to 7 years, I went on to become a business development manager. And at that point, I was part of one of the biggest agencies, and that's when I decided, let's if I've been investing so much time into someone else's work, why not take that leap of faith and start something of your own. And that's how Think Tank Digital came into being. So mashallah, it's now been almost 4 years since my own startup has blossomed. And it's a 4-year-old company with about 13 to 14 individuals working, and we have mashallah served over 100 clients in this 4 years of span. Things have been great, mashallah. So yeah. Wow. So from not becoming an accountant to now becoming, mashallah, a marketer, an expert in digital marketing. What we know and how वैसे बहुत सारे लोग आपको वैसे भी जानते हैं माशाल्लाह, और the marketing community और वो सारे organization corporations के साथ हम काम करते हैं. अच्छा, साथ साथ आपकी इजाजत होगी बुरहान, तो हम comments लेते रहेंगे. Tala Ahmed has joined us. Thank you so much, Tala. You join us every time. और बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का. और तला, आज के प्रोग्राम में स्टे ट्यून रहेगा, बिकॉज अभी हम और भी बुरहान से बहुत सारी जबरदस्त चीजें जानने वाले हैं. सो बुरहान, विद योर जर्नी टू दिस मार्केटिंग एक्सपर्ट माशाल्लाह दैट यू बिकम, 4 years आप कह रहे हैं, मुझे तो लगता है दैट यू एक्सिस्टेड माशाल्लाह फॉर एवर. यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी दैट आवर फर्स्ट my first affiliation with Burhan was, I think, 8 years back, if I'm not wrong, 9 years back. Or tab Burhan was also working as a social media person or expert the us वक्त भी काम कर रहे थे. But I would want to add here that the reason that I always used to look for Burhan's contact जब भी हम कोई marketing या किसी चीज के ऊपर काम कर रहे थे, वो एक खास वजह थी कि बुरहान को कुछ भी समझाना बहुत आसान रहता था. With you, it has always been very easy to tell you or describe to you कि तो ये तो जो है ना, इस डिलेमा के बारे में मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि ओवरऑल स्पेशली बुरहान पोस्ट कोविड, आपको पता है कि सब लोग अपस्किलिंग की बात कर रहे हैं, सब लोग अपने बिजनेस को अपस्केल करना चाह रहे हैं. तो जो ये मिथ बस्टिंग वाली रिक्वेस्ट मैंने आपको भेजी, तो एक खास वजह से थी. वाइल्स आई एम अराउंड द कम्युनिटी, और हम कम्युनिटी में प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं, वहां पे एक फेयरली बड़ा क्लियर गैप है बुरहान, जहाँ पे वो कोई कंप्लेनिंग नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि जी हमें बड़ी सख्त कंप्लेन है किसी के साथ इन द कम्युनिटी. नो, it's just the fact that there is a very clear gap where people are confused, where in between किसके पास जाए, कौन हमें लॉजिक समझा देगा कि हम कितने हजार रुपए, कितने लाख रुपए, किस किस्म की कैंपेन करें, ब्रांड की आइडेंटिटी कैसे डेवलप करें.
उस सब में एक अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और बहुत डिलेमा है, Burhan, and there are people who are wanting to reach out and ask so many million questions. What would you say? I mean, आपका क्या So, observation रहा है over my this year? my my viewpoint on this is कि if I track back to 2012, that's when I started off my digital journey. तो उस point के ऊपर बहुत हाँ, कम digital agencies थी और जो जो digital agencies थी पाकिस्तान के अंदर वो बहुत अच्छा काम कर रही थी अपने अपने personal silos के अंदर, वो बहुत बिल्कुल, महंगी थी। बिल्कुल, वो महंगी इसलिए थी बिल्कुल, बिकॉज लाइक if आई एम गिविंग यू क्वालिटी सर्विस, इफ आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग चलनी चाहिए, तो उस तरीके से वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग करते थे। ठीक है, जब मैंने इस करियर को स्टार्ट किया तो उस टाइम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने डराया है कि क्या कर रहे हो, सप्लाई चेन में कुछ कर लो, अकाउंटिंग में कुछ कर लो। क्यों? बिकॉज लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था। But over हम्म, the past 8 years, now it has suddenly transformed into a bit जहाँ पे हर गली के अंदर कोई 5 डिफरेंट डिजिटल एजेंसीज खुली हुई हैं। एग्जैक्ट, हर सॉरी, हर शख्स कहता है कि उसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, वो आपकी मार्केटिंग संभाल लेगा। हर शख्स के पास एक दुकान है जो कि वो अब बेचना चाह रहा है। यही लोग 8 साल पहले गायब थे। ये लोग लाइक मजाक उड़ाते थे। लाइक लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु यूज्ड टू make fun of me for not working in a bank or for not doing the traditional stuff that Pakistani young guys are supposed to be doing. They used to make fun of यस, me, and now these are the same people who tell me कि बुरहान कभी टाइम मिले तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखाओ। मैं सोचता हूँ कि इस फील्ड के अंदर बहुत स्कोप है। तो मसला ये है कि फील्ड के अंदर बहुत स्कोप है और बहुत सारे लोग ठीक हैं जो है, कि बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत सारे लोग ठीक अच्छा है, वो भी करते हैं। बट प्रॉब्लम बीइंग कि बहुत सारे लोगों को इस काम की नहीं नॉलेज है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये एक फैट बन गया कि हर शख्स को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग करना इज एज ईजी एज मेकिंग अ फेसबुक पेज और मेकिंग एन इंस्टाग्राम पेज और यस, बस मैं बना दूंगा और मैं मिलियंस यस, कमाना स्टार्ट कर दूंगा। दैट्स यस, नॉट द केस। For you to manage digital marketing, a lot of effort and a lot of time and a lot of research goes into place. A lot of people ask me कि आपके पास कोई पैकेज है जो कि आप हमें बता दें जिसके अंदर आप मेरा सोशल मीडिया मैनेज कर लेंगे। And I've been telling every person for the past 8 years, there's no package. Take it. Why? Because if there were a package, everything would be very uniform for every other brand. My company manages more than 20 brands, and each and every single brand has a completely different tone, and we need to set a completely different research and strategy for them. So digital marketing is not an easy task. It is definitely something through which you can make a lot of money. It is definitely something that you can learn. It is not rocket science. It is not something कि जिसके लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे। इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि आपका ब्रांड के की पॉइंट्स क्या हैं, आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए। एंड वंस यू हैव क्रैक दैट कोड, you can honestly be making a lot of money without even spending a lot of money on your digital marketing. And there are a lot of good वाओ, and brilliant cases from Pakistan, जिन जिन लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से सोशल मीडिया को स्टार्ट किया है, ब्रांड्स ने जिनके पास कोई दुकान नहीं थी, जिनके पास कोई जगह नहीं थी, जिनके पास सिर्फ एक फेसबुक पेज था, उन्होंने उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने ब्रांड्स को ट्रांसफॉर्म किया। एंड टुडे दे आर ऑलमोस्ट मल्टी मिलियन पाकिस्तानी रुपीस कंपनी। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत स्कोप है। बहुत सारे वाओ, लोग आपको पागल बनाते हैं और चूंकि लोगों को नहीं अंदाजा, द रीजन वाई यू मेंशनड के, एंड जी, आई वुड टेक इट एज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट कि आपने बोला कि मैं उन लोगों में सोचो कि आपकी या तो फिर किसी भी ऐसे शख्स की बात बिल्कुल, समझ लेता है जिसको डिजिटल मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज माई गोल सिंस द वेरी स्टार्ट हैज बीन नॉट जस्ट डूइंग द वर्क। ठीक है, लाइक मैं किसी एक शख्स मुझे बहुत छोटी उम्र के ने चीज़ सिखाई थी कि अगर आप किसी को उस लेवल के ऊपर जाके बात करें जिससे जो कि उसको समझ आती है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा एक बच्चे से बात करता है तो वो बच्चों की तरह बात करता है, बट जब एक बड़ा एक बड़े से बात करता है तो वो बिल्कुल बड़ों की तरह बात करता है। एंड देयर इज नो शेम इन द फैक्ट दैट कि मुझे पता है या आपको नहीं पता। नॉलेज इज समथिंग जो कि आपको जब मिल जाती है तो वो कभी जाती नहीं है वापस, और वो शेयर करने से कम नहीं होती, वो शेयर करने से हमेशा बढ़ती है। So I've always believed in the fact ओके, that if I'm talking to someone, I would firstly try and gauge कि इनकी digital knowledge क्या है। I'll try to throw a few keywords and I'll see how the responses is. अगर उसके ऊपर response नहीं आ रहा तो फिर आप अपने आप को थोड़ा सा और लेमन तरीके से समझाने की बात करें और फिर उस तरीके से आप उस बंदे के साथ कम्युनिकेट करें। Once I'm able to come down to my audience's level and understand how they see digital, I'll be using a word caption। ठीक है, for me caption is a completely different meaning altogether। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपके लिए caption शायद कुछ और होगा।
तो मेरा जो बिल्कुल। की अंडरस्टैंडिंग होती है कि पहले मैं लोगों को समझने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी कि उनको कितनी नॉलेज है। उसके बाद जब आप उनसे हाँ, उस लेवल के पर जाके बात करें तो फिर आपको उनकी प्रॉब्लम समझ आना स्टार्ट होती है और आप उनको अपनी प्रॉब्लम समझा सकते हैं। I felt a lot हाँ, of people who know digital marketing try and use very big words, try and use scary words that even I get scared sometimes. And I've been in yes, this field for the past yes, 8 years, and I feel there's no reason because this is mashallah the only platform that I feel is the most transparent in terms of where my money is going and how I'm spending my money as compared to any other medium out there. On TV, you can be wow, spending millions of rupees and you wouldn't know who have watched my television, advertisement. On digital, if you exactly, spend even 500 rupees, I can tell you exactly कि अगर कोई शख्स जिसने आपका कंटेंट देखा है तो उसकी एज ब्रैकेट क्या था, उसने कितने बजे आपका कंटेंट देखा है, उसने कौन सी डिवाइस के ऊपर देखा है, और वो शख्स किधर रहता है, वो शख्स कौन से प्रोविंस में रहता है, क्या वो मैरिड है या नहीं है, सब कुछ बता सकते हैं। तो इतने स्टैट्स आपको कोई फील my नहीं देती। God, तो इस चीज़ को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें और सही पार्टनर के साथ काम करें तो इट कैन डू वंडर्स। wow. थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दैट इन। और इसके साथ साथ अच्छा, तन्हा ने एक सवाल भी पूछा है, मैं वो भी अभी आपसे पूछूंगी। तन्हा, आई जस्ट पुट योर क्वेश्चन हियर। अरीब हैज आल्सो जॉइंड अस, थैंक यू अरीब, एंड इट्स गुड टू हैव यू हियर एज वेल, थैंक यू फॉर योर काइंड मैसेजेस एवरीबॉडी। तन्हा, मैं आपका सवाल अभी लेती हूँ, पर एक चीज बुरहान दैट आई वुड रियली वांट यू टू आल्सो स्पीक अबाउट व्हाइल्स वी आर स्पीकिंग इज द फैक्ट कि जब हम अच्छा, और यहाँ पे हाँ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी दैट वेयर proud associations with we have proud associations with the think tank digital mashallah। mentoring hub का लोगो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो mentoring hub के पेड कैंपेन्स चलते रहे हैं, mentoring hub का पूरा आइडेंटिटी जो है वो हमारे यही एक्सपर्ट हैं उस पूरी आइडेंटिटी के बिल्डिंग के पीछे। इस वजह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है थिंक टैंक डिजिटल मेरे जिंदगी में भी और मेरे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर भी। And I've been fairly very thankful to these guys. Why? Because मुझे पता है कि मैं हमेशा इनके पास एक बॉक्स लेके गई हूँ, और बॉक्स लेके गई हूँ विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसका मुझे खुद एहसास होता है हमेशा कि जब मैं इनके पास जाती हूँ तो मैं एक बॉक्स भी नहीं, मुझे लगता है मैं एक सूटकेस लेके जाती हूँ जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं वो सारी जाके इनके डेस्क पे डाल देती हूँ, और फिर ये मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं और मुझे एक एक करके चीजें समझाते हैं। आई नेवर न्यू देयर वाज अ डैशबोर्ड। इन्होंने हमेशा मुझे, आई ऑलवेज नो कि मेरे एड कैंपेन्स किन लोगों के लिए चले हैं, किस एज ग्रुप पे चले थे, किसने कब क्लिक किया था। इतनी ट्रांसपेरेंसी आई नेवर न्यू बुरहान की कभी इतनी ट्रांसपेरेंसी होती भी है डिजिटल मीडिया में, एंड एट द सेम टाइम मेरा जो मैं तलहा का भी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी वो ये कि कंपटीशन एक्सट्रीम है, और तला भी यही पूछ रहा है दैट हाउ टू सर्वाइव द एक्सट्रीम कंपटीशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप भी देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का जो, और खास तौर पे पोस्ट कोविड, क्योंकि हम तो फिर कुछ ऑफलाइन खरीद ही नहीं रहे ना, we've been buying mostly online, so there's been a huge flux of ads, and even YouTube now, the streaming is not smooth, वो हमेशा ब्रेक करता है for more adverts. I remember YouTube streaming was different a few months ago, now it has more ads. So ये जो सारा कंकशन पोस्ट कोविड आया है, also इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बुरहान बताएं, of what do you generally suggest to a person who is looking into building up an identity, वो किस तरह से ले इन चीजों को? Is it something that is supposed to be mindfully be taken care of, या बस ओवरवेलम ही होते चले जाएं यार जो जो चल रहा है with everything नहीं, नहीं, around? बिल्कुल। तो इन द टाइम ऑफ कोविड बिज़नेसेस एक्चुअली जो तरह से आपका सवाल है कि कॉम्पिटिशन को किस तरीके से सर्वाइव करना चाहिए, कोविड ने तो कॉम्पिटिशन को ख़त्म कर दिया था बिकॉज़ डिजिटल का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है वो ऑन ग्राउंड मार्केट्स हैं, जहाँ पे जाके आप एक्चुअली चीज़ बाय कर सकती हैं। यू कैन ईदर बाय अच्छा, ड्रेस ऑनलाइन और यू कैन ईदर गो टू द मार्केट एंड यू कैन बाय द सेम ड्रेस फ्रॉम अ वाह, ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर। तो ठीक जब है, कोविड हुआ तो वो कंपटीशन खत्म हुआ कि आपकी जो एक्चुअल फिजिकल स्पेसेस थी वो बंद हो गई, विच इज़ व्हाई अ लॉट ऑफ ब्रांड्स रियलाइज्ड आल्सो कि ठीक, डिजिटल तो वो जगह है जहाँ पे हमें एक्टिव होना चाहिए था। बिकॉज अभी तक डिजिटल पे लोग इसलिए नहीं जाते बिकॉज वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत होंगी
और मैनेज किस तरीके से होगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जिसकी ऑनेस्टली उनकी गलती भी नहीं है, बिकॉज दीज पीपल हैव नेवर एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी। और अगर उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस भी किया था तो उन्होंने किसी ऐसे पार्टनर के साथ किया होगा जिन्होंने उनको फर्स्ट चूना लगाया, उनसे पैसे लिए, उस पार्टनर को खुद काम नहीं आता होगा, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग के अंदर एक डर आ जाता है। और ये डर मैंने बहुत देखा है, बिल्कुल like आप since I've been talking to people, there's always a client which has worked with an agency जहाँ पे उनको काम बिल्कुल भी समझ नहीं आया, और उनका दिल इतना बर्दाश्त हुआ हुआ होता है ना, वो कहते हैं कि हमें डिजिटल पे काम नहीं करना बिकॉज फायदा नहीं होगा। एंड आई कीप टेलिंग देम कि वन बैड एक्सपीरियंस इज नॉट, डिजिटल इज नॉट अ फील्ड जहाँ पे हर बंदे को सक्सेस मिलता है। डिजिटल इज अ फील्ड जहाँ पे आपको टाइम लगाना पड़ता है, जहाँ पे आपको डेडिकेटेड होना पड़ता है। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि लोगों को इस डेडिकेशन से इतना डर क्यों लगता है, while this is the only platform which is actually and truly free. You have a Facebook page, you can potentially be posting anything you want as many times as you want. There's no restriction on it. And on any other mode of marketing, you would actually have to pay money. अगर आप ब्रोशर भी प्रिंट कर रहे हो तो आपको ब्रोशर प्रिंट करने की कॉस्ट देनी पड़ेगी, आपको किसी शख्स को खड़ा करना पड़ेगा जो कि उसको देगा। तो अगर आप एसएमएस भी भेज रहे हो तो आपको एसएमएस भेजने की कॉस्ट देनी पड़ रही है। On digital media, you don't have to bear any cost. All you need to do is make a free Facebook page and start advertising for yourself. So in times of COVID, businesses have actually thrived and they have performed very well. A lot of our clients made record revenues, to be very honest, कि अगर आपने पिछले साल के अंदर जितनी 3 महीने की सेल्स होती थी, शायद उनकी वो एक साल के ना एक महीने की सेल इतनी ज़्यादा हुई है। Why? Because of the fact we actually thought out the entire process. If I know that someone is sitting at home, I would be making my advertisement so customized and so customized according to the situation. Digital is not something जहाँ पे आपने एक बड़ी generic सी चीज़ लिखी और आपने सबको भेज दी। आपकी फेसबुक फीड के ऊपर इतना कंटेंट होता है कि अगर मैं आपसे अभी बोलूँ, अगर आपने सुबह को कौन सा ऐड देखा था, आपको नहीं याद होगा। अब एक दफ़ा अगर आपको कभी रियलाइज़ होना है, अभी रिसेंटली व्हाट आई डिड वाज आई वाज गोइंग थ्रू माय फोन and I was scrolling through, and once I scrolled through something, I saw something, and then I realized I was like I need to see it again, वो अच्छी चीज़ थी, ठीक है, मैं उसको वापस जाके देखूँ। जब मैंने उसको वापस से स्क्रॉल अप करने की कोशिश की तो आई रियलाइज्ड कि मैंने उस छोटे से स्पैन के अंदर इतना सारा कंटेंट मिस आउट किया था और देखा था कि वो मेरे दिमाग ने डिसाइड भी नहीं किया। सो द अमाउंट ऑफ स्पीड जो है, जिस स्पीड से हम लोग कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होते हैं डिजिटल के, वो बड़ी स्केरी है। एंड फॉर यू टू एक्चुअली क्रिएट अ पीस ऑफ कंटेंट के सामने वाला बंदा रुके और उस चीज़ को देखे, टेक्स अ लॉट ऑफ थॉट process into it. A lot of thought process goes into design. A lot of thought process goes into what would be written on the visual. क्या चीज़ें होंगी, दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। और लोगों को अगर किसी चीज़ के लिए इन्वेस्ट करनी चाहिए अपना टाइम, तो वो इस कस्टमाइजेशन में करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी डू फॉर लॉट ऑफ क्लाइंट्स। वी अंडरस्टैंड व्हाट देयर ऑडियंस इज and we would customize the ad so much. If I were to give you an example, one of our clients is a food-based client. They are in the dessert fraternity, और वो desserts बेचते हैं। तो हमने जब उन desserts की advertisement चलाए Facebook के ऊपर, तो my advertisement which was being shown to mothers living in Clifton and Defense had a separate text as compared to the same advertisement which was being shown to fathers in Defense and Clifton. It had a different caption altogether. So when mothers were being shown that advertisement, it is the same visual, okay, but they were being told that have you had a stressful week because of everyone being at home and you constantly cooking and working around the clock. You deserve some time off and you should order this for yourself. Why? Because this is pure indulgence for your taste buds. Okay, and that it was an advertisement that was being shown to females. Fathers on the other hand were being shown the same visual, ठीक है, वही आइसक्रीम का आपको विजुअल नजर आ रहा है, बट उसका जो कैप्शन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप घर से काम कर रहे हैं और आप बहुत तंग हो गए होंगे, तो here's a little something that you should have. This customization is not possible on any other medium, and this customization is what not a lot of people do. लोग क्या कहते हैं कि चूंकि उनको पैसे बनाने होते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके लिए कंटेंट मार्केटिंग कर देंगे, हम डिज़ाइन कर देंगे, हम 4 पोस्ट डाल देंगे आपके फेसबुक पेज से। वो चलाऊ काम होता है। चलाऊ काम से आप सिर्फ अपने फेसबुक पेज को एक्टिव रख सकते हैं, बट आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यू कांट एक्सपेक्ट इट टू ग्रो। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि या तो हम क्वालिटी पे काम कर लें या हम क्वांटिटी पे काम कर लें, जो हमेशा की एक स्ट्रगल रही है विद आइदर सेलिंग अ सर्विस और अ प्रोडक्ट।
और मेरे ख्याल से आप बिल्कुल एग्री करेंगे कि क्योंकि आप भी सर्विस एंड पर हैं कि सर्विस सेल करना ज्यादा मुश्किल होता है, इट्स इजियर टू प्रॉब्ली सेल अ प्रोडक्ट और अ फूड एलिमेंट. Why? Because you can physically see it, and service on बिल्कुल. the other hand requires much more effort. लेकिन हम्म. आप जिन जिन चीजों की तरफ बुरहान पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, if I am to recap in a few pointers, आप बात कर रहे हैं recognition of what is required. You're talking about tapping the right kind of audience because every audience is not your type. ठीक है? Very true. You're हम्म. talking about trying to take the pain away of the customer or the potential client looking at the advert. तो मैं हम्म. आपको बताऊं, आप तो सारे माइंडफुल मार्केटिंग के टिप्स बता रहे हैं, which हम्म. means that you deal with marketing very mindfully, जो कि मैं हम्म. बार बार अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बुरहान अपनी टीम के साथ भी हम कोशिश यही करते हैं कि हम माइंडफुली टेक्निक्स को, टैक्टिक्स को, लर्निंग एंड डेवलपमेंट को, चाहे वो कोई भी चीज हो, या मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि बुरहान की जितनी बातें हैं वो सब हम लोगों को यही बार बार रियलाइज करा रही है कि हमारा कस्टमाइजेशन की जो बात बुरहान आपने की, वो कस्टमाइजेशन सिर्फ वही शख्स करेगा जो कि माइंडफुली इस बात को समझेगा कि उसको हम्म. पॉज देना है, समझना है और फिर आगे बढ़ना है. बिल्कुल. और बिल्कुल. अक्सर एक और चीज बुरहान मेरे जहन में जो मैं यहाँ पे आपसे शेयर भी करना चाहती हूँ, वो ये कि जैसे हम लोग यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली बिजनेस स्कूल्स में, बिजनेस ग्रेजुएट्स कनेक्ट कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व एक हमें सिखाया जाता था, याद है, मार्केटिंग के अंदर. एंड उसी के साथ साथ एट द सेम टाइम आई रियलाइज आफ्टर मीटिंग यू एंड ऑल्सो वर्किंग विद यू कि बिजनेस का भी एक लाइफ साइकिल कर्व है. हम हम्म. कितने स्टार्टअप्स को देखते हैं जो कि स्नैप करके आते हैं और स्नैप करके चले जाते हैं बिकॉज हम्म. ऑफ द फैक्ट लूज विजिबिलिटी, क्योंकि वो जब पीक वाले टाइम पे अगर पहुंच रहे होते हैं ना बुरहान, उसके बाद कोई प्लान ऑफ प्रोग्रेशन या सस्टेनेबिलिटी नहीं होता. या बिल्कुल. जिस डिजिटल एक्सपर्ट के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, वो इस कैपेसिटी में उनको काउंसल नहीं कर पाता कि अगर आपने इस चीज को लॉन्ग टर्म चलाना है तो वो कैसे चलेगा. सो दिस हम्म. इज अनदर myth that I would want you to add a fact to, कि अगर हमें अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी या सर्विस की आइडेंटिटी या डेवलपमेंट पे काम करना है, तो क्या आप भी समझते हैं कि उसकी सस्टेनेबिलिटी पे पहले ही काम करना उतना ही जरूरी है जितना कि उसके स्टार्टअप के टाइम पे जरूरी होता है एफर्ट लगाना. One thing that I feel every startup misses is कि हर startup को लगता है कि उसका idea बहुत अच्छा है और होते भी हैं, like but you need to have that. One thing that I feel is missing is not a lot of people have the ability to take critique, कि अगर आप उनके आइडिया को क्रिटिक करो कि यार ये चीज़ तो वो भी है. पॉइंट भी कि एक बिजनेस के अंदर एक छोटे से एलिमेंट के चेंज होने से वो बहुत कोई यूनिक आइडिया नहीं हो जाता. And a lot of people, because they don't do proper research, they don't really know कि बहुत सारे लोगों का तो ऐसा आइडिया होता है जो कि हो रहा होता है, बट चूंकि उनको नहीं पता कि वो बिजनेस एग्जिस्ट करता है, डज नॉट मीन कि किसी और को भी नहीं पता कि वो बिजनेस एग्जिस्ट करता है. A very good example of this is recently you might have seen कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी एडवर्टाइजमेंट्स बने हैं जो कि डायरेक्ट रिप ऑफ होते हैं किसी इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट के, जो कि सीन टू यस सीन यस यस, बिल्कुल एग्जैक्टली आप उसको रेप्लिकेट करते हो. बिल्कुल बिल्कुल. ये होता क्यों है? बिकॉज जिस शख्स ने उस आइडिया के बारे में सोचा होगा, उस शख्स ने ये सोचा हाँ, होगा कि यार इतना डीप घुस के कौन रिसर्च करेगा और कौन देखेगा कि यार अजरबैजान के ने क्या ऐड बना था. बट प्रॉब्लम, ठीक है, सच्ची बात ये है कि इंटरनेट ने अब हम सबको एक काबिलियत दे दी है कि हम रिसर्च कर सकते हैं, तो लोगों के पास एक ओपन फील्ड है. बिल्कुल. तो एक चीज़ की रियलाइजेशन दैट इस हर स्टार्टअप को थोड़ा सा एक तो क्रिटिक लेना चाहिए कि कि उनको ये सोचना चाहिए कि उनका आइडिया बहुत बुरा है, उस आइडिया को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं. नंबर वन. नंबर टू इज डिजिटल इज द प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन एक्चुअली सी विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी वेदर देयर बिजनेस आइडिया हैज पोटेंशियल और नॉट. A lot of people spend a lot of time thinking about business, and before they even start off with their business they say कि हम इस चीज़ को streamline कर लेते हैं, हम यहाँ पे पैसा लगा देते हैं, हम ये कर लेते हैं. When I started my own business, we started with minimum money. I did not even have an office right in the beginning. I was doing my masters,
एंड मैं उस टाइम के ऊपर मेरी 6 से 9 बजे रात को क्लासेस होती थी, तो मैं सुबह 11 बजे से यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के अंदर जाके एक पावर सॉकेट लगा के अपने लैपटॉप के साथ बैठ जाता था। फ्री इंटरनेट भी मिल रहा है आपको, फ्री की जगह भी मिल रही है और आप बैठ के काम कर रहे हैं। तो काम करने के लिए वाह, आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। काम करने के लिए आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। काम करने के अंदर आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए जो कि आपको आफ्टर यू हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च आप उसको रिफाइन करें। एंड यू शुड ऑलवेज हैव अ वेरी ओपन हार्ट टुवर्ड्स मार्केटिंग, बिकॉज whenever I speak जी, to a new startup about marketing, when I tell them कि हम आपकी marketing करने वाले हैं, we're very transparent with them and we tell them that honestly यार मैं आपको कुछ गारंटी नहीं कर सकता कि ये चीज़ चलेगी नहीं चलेगी। Just कैसे the बात, same way you are experimenting with your brand, experimenting with a few strategies. I'll think of four जी, different strategies. One of them might work, one of them might not work. But eventually, within a span of 2 months, we would know what is working out and what is not working out. what is not So right, ठीक है, we always keep that ideology, and we always keep a very open and canvas. हमारे साथ ये होता है कि एक वो तरीकेकार होता है जो कि क्लाइंट को लगता है सही है, एक वो तरीक़ेकार होता है जो कि हमें लगता है सही है, और एक वो तरीक़ेकार होता है जहाँ पे क्लाइंट और हम मिलके थोड़ा-सा एक म्यूचुअल कंसेंसस के ऊपर एक चीज़ करना चाह रहे होते हैं, और एक वो तरीक़ेकार होता है जो कि क्लाइंट आगे अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से जो सजेशंस ले रहा होता है ना, बिकॉज़ हर शख्स को लगता है कि उसको डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है, और हर शख्स को लगता है कि वो जो आइडियाज़ दे रहा है कि क्योंकि फलाँ शख्स ये कर रहा था, तो आपको भी ये करना चाहिए, इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट यू कैन डू ऑन डिजिटल। वन पीस ऑफ कंटेंट फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ब्रांड क्या कहते हैं कि जो वो फेसबुक पे कर रहे हैं वही वो इंस्टाग्राम पे करेंगे, वही वो लिंक्डइन पे करेंगे, वही वो कोशिश करेंगे किसी और प्लेटफॉर्म ट्विटर पे भी जाके वो कर लें। If you want to चलेगा, be a relevant brand, nahi. If you want to be a relevant brand, what you need to do is you need to understand the platform that you're on and you need to customize your content accordingly. For example, a brand can post a real life image of a person doing something, like an actual image shot from a cell phone or a DSLR on Instagram, and not write ठीक है, anything on the picture but write a very nice ओके, caption with it. जब वही चीज़ आप फेसबुक के ऊपर डाल लें तो आप उसको थोड़ा सा वीडियो स्लाइड शो के ना डाल सकते हैं, उस तस्वीर के ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख सकते हैं। जब वही चीज़ आप इंस्टाग्राम के ऊपर सॉरी लिंक्डइन के ऊपर डाल देंगे तो वो बड़ी प्रोफेशनल होगी। So when we manage brands and we manage their multi-channel marketing, we try and customize the content accordingly कि Facebook के ऊपर एक अलग piece of content जा रहा होगा, Instagram पे completely different piece of content जा रहा होगा, और LinkedIn के ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि इससे प्रोफेशनल, इससे कॉर्पोरेट दुनिया कोई नहीं है। And once you understand the platform that you're on, you can then develop the content accordingly, और उस पॉइंट के ऊपर जाके ब्रांड्स और लोग आपके साथ इंगेज करना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज अगर आप थॉट प्रोसेस नहीं डालेंगे और आप नहीं सोचेंगे कि आपके कस्टमर के बारे में कि कस्टमर क्यों देखेगा आपकी चीज़, ठीक है, कस्टमर को तो कोई ने ना पता है आपके ब्रांड के बारे में, कस्टमर तो ना जानता है आपको, तो अगर आपको कस्टमर की अटेंशन गैदर करनी है तो आपको कस्टमर की तरह सोचना पड़ेगा। यू वुड हैव टू नो व्हाट देयर प्रॉब्लम्स आर, यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड why they might want to engage with your brand, and you have that very little space, 0.35 seconds की आपके पास एक space है, 0.035 सेकंड की, जिसके अंदर वो ओह कस्टमर बस माय अपनी गॉड, फीड के अंदर ऊपर जा रहा है और आपको उसको रुकवाना है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज नो इजी गेम। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि बहुत आसान है, फेसबुक पेज ही श्योर, है, मैं खुद आई एम मैनेज कर श्योर, लूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज ये बुरहान, जो अभी आपसे बातों में मेरे जहन में आया, that I would really want to share here is the fact that because we do a lot of boot camps also, and that I get the opportunity of becoming a lot of national set up boot camps that are run by good institutions. But what I always see is that when they talk about elements of training a certain group for starting up their businesses, I don't see marketing being taken as a separate entity being put into the boot camp saying, how would you develop your marketing strategy? Now, I have come across a lot of programs and I've been a part of a lot of programs where we would see very clearly that they would be asked, "अच्छा, ठीक है, आप क्या mediums इस्तेमाल करेंगे? What mediums are you going to use and where are you going to be advertising?" But then at the same time, what I've always missed, और मैं हमेशा जब अपना feedback दे रही होती हूँ, I always try to add that to the wing of the boot camp here. We need to work with everybody on deciding, researching. Market research is something that's considered a traditional, very old methodology. लेकिन ये मार्केट रिसर्च और जो आपने अभी कहा rightfully
कि भैया if we don't know the trend of the market, if you don't know the trend of your customer or the pain point, जो आप बार बार empathy वाली बात कर रहे हैं, pain point समझना मतलब आप you're trying to empathize with your client to find out आपके सारे जो आपने procedures बताए, आप वो सब जगहों पे you're trying to empathize as the team lead to find out what your client needs. तो ये जो स्टार्टअप और ये जो बूट कैंप्स चल रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, व्हाट वुड यू सजेस्ट जब हम मिस कर रहे हैं मार्केटिंग वाली चीज को ट्रेन करना, क्या आपको लगता है कि ये सही है कि ना बूट कैंप भी सक्सेसफुल और कंप्लीट फॉर दैट मैटर किसी एक ग्रुप के साथ कि जिसमें मार्केटिंग ऑफ द बिजनेस या सर्विस इन्वॉल्व नहीं होगा? व्हाट यू थिंक? I feel it's a beautiful idea, and a lot can be learned from it. Then again, if you look at things from a very practical perspective, I also happen to be teaching as a visiting faculty in Ikra University, and one thing that I try and implement every time that I'm teaching a course is I try to not solely focus on what is written in the books and what is written in the course material. I would rather want to focus on the actual real life situations and giving my students the ability and the chance to look at things from a very practical perspective. Any workshop, workshops can definitely help a lot of people put a lot of sense into your brain, but that workshop in itself in isolation might be a beautiful piece which might teach a lot of people a lot of things. But if these people are just participating in this workshop for the sake of getting a certificate, then these people are not going to learn anything out of it. If these people participate for the sake of saying that I'm going to learn something from it and then I'm going to go back and implement it. Marketing is the same thing as mathematics. If you keep on doing it, you would remember the formulas and everything would happen seamlessly. I have clients who were running a startup, a digital startup आज से 4 साल पहले, और पिछले 5 साल से चला था, और अभी बीच में 3 साल का ब्रेक आया और 3 साल तक उन्होंने कुछ और काम किया. जब वो 3 साल के बाद वापस उन्होंने आके अपना डिजिटल के ऊपर स्टार्टअप करने की कोशिश की, that guy realized that everything has changed so much that he now have no understanding of how things are happening on digital, and he was very open and very transparent about it. Sadly, people over here are not transparent about it. Everyone feels कि हमें सब कुछ पता है digital के बारे में. No one wants to really put their mind into that market research. But market research के साथ भी it's not that market research जो कि बच्चे यूनिवर्सिटी के ना पढ़ते हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी primary and secondary researches हो रही हैं. You have the internet. You have the ability to be looking at what similar brands in Japan are doing, what similar brands in India are doing. If you are a technology-based startup which is making perhaps LED lights, then you can be looking at startups around the world who are doing LED lights, and all it would take is a few days of you googling and going into learning a brands kya kehte hain. The way that I look at what a competition is doing, I would search for that brand on Google. I would go to their website. I would firstly open up all of their social media links, and I would see कि Facebook पे क्या कर रहे हैं, Instagram पे क्या कर रहे हैं. And within a span of 5 minutes, you now understand exactly कि उस brand की communication क्या है. So it's very easy to research, but that requires time. Then again, and that requires dedication. People in Pakistan sadly don't want to put that much time and effort into it. They would rather be thinking कि हाँ मुझे पता है कि मार्केट में काम किस तरीके से होता है, ये कर लेंगे. बट जो लोग डिजिटल की पावर को समझते हैं और जो कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जो कि ये मार्केट ट्रेंड्स को देखते हैं और जो कि अपने आप को इतना अडेप्टेबल रखते हैं कि हम ऑडियंस के हिसाब से अपने बिजनेस को मोल्ड करेंगे, अपनी आइडियोलॉजीज के हिसाब से बिजनेस को मोल्ड नहीं करेंगे. Those sort of brands become very successful on digital. Super. Thank you so much for adding the note. और एक और चीज मैंने पहले भी शेयर करनी थी, मैं भूल गई करने में आपसे बातों के को स्टार्ट करने के, उसमें के is also mashallah a teacher and he's been teaching marketing for a while as well. And at the same time, एक सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था that for the first when I found out for the first time कि आप पढ़ा रहे हैं, the books that are taught to us at university, these usually are international content. These are by international writers, and they train our minds and the minds of the students within a classroom according to the international case studies. हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो हमारे curriculums का part है, ये ज़्यादातर वो writers और वो situations और वो case studies present करते हैं जो कि international होते हैं. And at the same time,
जैसे अभी आपने खुद जिक्र किया, don't you think that is solely mindfully very important for us to make sure कि जिन लोगों को हम ग्रूम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर, they know how to survive in our market first? I feel no, and I'm in no, to be very honest, position to critique on the books that are being taught. Why? Because they've been written by professional and very qualified people. The Nothing books against that. themselves are Nothing against amazing, that. but the हाँ, problem being that if you solely focus on, I personally feel that I did my masters back in 2017 or it was 16, I don't even remember. And this is how little it taught me, because I feel when I did my masters, it was a sheer waste of money. Apart from a couple of courses which are very practical, and I was taught a lot of good things, and those were the highlights of my a masters, in the entire 2 years of my masters. Just get that. one course which taught me less about the books, but more about what this course would actually mean in my real life. And this is an strategy that I now like to implement myself. If that teacher was able to make a difference in my life, I might be able to make a lot of difference in someone else's life. I feel learning from a very theoretical perspective is an important bit. Why? Because it teaches you the foundations, but Biल्कुल, solely focusing on that theoretical bit is not enough. Why? Because now for there's sure. so much competition. There's so much competition Yes, that you, until unless you don't know everything about what you're doing, you would not be able to survive in the market. Just to I'm in the digital marketing field. If you want to see कि digital marketing के ना कितना कंपटीशन है, तो आप कभी भी किसी ऐसी पोस्ट के ऊपर फेसबुक पे जहाँ पे किसी शख्स ने लिखा होता है कि यार आई एम लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, please get in touch, you would see at least 400 to 500 comments on them, and all of these 500 people are trying to sell one of their services. This is how competitive yes, the market is. And in this competition, if you are not street smart, or digital smart, or if you don't really know how to crack the digital code, you're not going to be surviving in this market for very long, because you might be able to make money from one person, you might be able to make money from two people, आप है चार लोगों को पागल बना देंगे, बट वो चार लोगों का भी एक सर्कल होता है, वो चार लोगों के सर्कल के अंदर जब बात फैलती है तो आपकी बेइज्जती होती है. One thing that, and I kind of go against my own ideology when it comes to marketing my own company, because we don't focus a lot on digital ourselves. We have an active हाँ, digital social media page, बिल्कुल, everything, but we don't like to boast a lot about what we do over there. Why? Because we rather focus on the fact कि आप word of mouth के ऊपर इतना focus कर लो कि people themselves they find you on digital rather than you finding them on digital. So if I do wow, something good for you, you are going to go out and talk to your friends about it. And then if I do something good for them, they are going to go out and market me in front of other thousand people. That marketing is the best form of marketing that there is. And this is what we try and do for a lot of clients through digital. कि हम through digital we reach out to one person, and if that one person converts, that's now one person is my protagonist. ये आगे जाके अपने दोस्तों को convert करेगा. So it's about winning perfect. small battles. It's not about winning a very big battle. Digital के ऊपर you always keep your battles small. You always keep them very achievable. You don't focus on the fact कि मैं एक महीने के अंदर 50 लाख रुपए यहाँ से कमा लूंगा, बट आप शायद फोकस रखें कि मैं एक महीने से यहाँ से 70-80 हज़ार रुपए कमा लूंगा. बट उस 70-80 हज़ार रुपए से जो मैं कमाऊंगा, आई एम गोइंग टू पुट दैट नॉलेज बैक इनटू माय बिजनेस, बिकॉज इफ आई एम नॉट गोना पुट दैट नॉलेज बैक इनटू माय बिजनेस, I might not be able to survive very long. Oh my God. Honestly, matlab, thank you so much for all of the wisdom that you're pouring in, because I know that for a lot of people, this is more than what they need at this point in time, Burhan, which is the true honest fact. Now, एक और चीज that I really wanted you to touch base on before we move towards wrapping up the program is the fact that when we're talking about और अभी जो मैंने जो आपसे curriculum का सवाल पूछा था, I would like to add here that the reason that I put the question out to Burhan was the fact that I'm happy to know that Burhan would also endorse as an expert the same कि अगर हम institutions में एक अच्छी amalgamation, एक अच्छा mix बना लें of the theory, of the expert saying something, and at the same time हमारा अपना market क्या है, what are the dynamics, what does a person do, वो चीज को अगर अगर हम amalgamate कर लें और एक अच्छा सा mixture बना लें, I think that we'd be producing a lot, many better graduates in terms of marketing या any other subject besides anything else.
Very true. इसके अलावा जो एक चीज मेरे जहन में है बुरहान, वो ये कि when we talk about uh, when we talk about boot camps, when we talk about activities, when we talk about workshops, we're looking at a glass ceiling. मैं हमेशा ये कहती हूँ, and I think जिस time पे शुरू में मैं आपको समझा रही थी about what I wanted from the hub was the same. कि there is a proverbial glass ceiling that exists around us as a community. Now, this Hmm. glass ceiling is something that we all work with, और वो बहुत दफा हम वेट नहीं करते, एंड देयर आर लॉट ऑफ फियर्स, जैसे भी आपने टच बेस किया कि देयर इज फियर ऑफ फेलियर, देयर इज आल्सो फियर ऑफ लूजिंग मनी, देयर इज Hmm. आल्सो दैट ट्रस्ट डेफिसिट, जो मेरे ख्याल से मैं आप अग्री करेंगे कि यू नो विद हु टू ट्रस्ट एंड हु नॉट टू ट्रस्ट. बिल्कुल, उसके बिल्कुल. साथ साथ with the world entering the fourth industrial revolution, not many people in this country know about the industrial revolution. At the same time, जो आप टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग ऑल्सो हैज crept up in पाकिस्तान. और मेरे ख्याल से आप भी देख रहे होंगे कि हर जगह हमें फ्रीलांसिंग के एड्स और बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल. प्रमोट किया जाता है. पाकिस्तान ने cropped up to level 4 if I'm not wrong in terms of being a Very true. freelancing country जो प्रमोट कर रहा है और जहाँ पे लोग प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को. आपके ख्याल से anybody who is listening to us now and probably is going to watch the rerun again from you as an expert, freelance marketer, freelance social media manager, uh, कि कौन इंसान कर सकता है? What is the 3 or 4 or 5 pointers that you feel this person is supposed to have in their bag as a skill before they opt for something like this, ताकि वो गिरे नहीं, वो फेलियर वाली चीज ना आए, I think कि ये आगे बड़ा बढ़े, बड़ा बेहतर interesting करके सवाल बढ़े. है ना. And a lot of people they keep on asking me as well कि इसकी prereqs क्या है, कि हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग हमें सीख क्या सकते ये हैं. what is. The only thing हाँ. I think any person requires to learn about digital marketing is सबसे पहले तो आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास डेडिकेशन होनी चाहिए. एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ये नहीं बोलती कि आप अपनी नौकरी छोड़ें, कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप वो छोड़ें, या आप अपने स्पेस में जाकर ये आप एक्स्ट्रा टाइम भी ना कर सकते हैं बहुत आराम से. ठीक So है, number one ठीक है, is if you want to learn about digital marketing, whatever you're doing right now apart from digital, अगर आप digital में नहीं हैं, अगर आप कुछ और कर रहे हैं, then you don't need to change your profession right now. You can simultaneously start learning about digital and start exploring whether this makes sense to you or not. If you are a doctor, if you're working a day job, तो आप रात को सीख सकते हैं. अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप दिन के ना यूनिवर्सिटी के ना पढ़ रहे हैं, तो आप रात को सीख सकते हैं बैठ के. ठीक है, तो नंबर पहली चीज़ तो अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी शख्स जिसके पास टाइम है और जो कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा और प्रोडक्टिव करना चाह रहा है, कैन गेट इनटू डिजिटल मार्केटिंग. These ठीक है, people, if they learn digital marketing, and then secondly आपके पास YouTube है, आपके पास बहुत सारी जगह है, आपके पास वर्कशॉप्स हैं, आपके पास बूट कैंप्स हैं, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. एंड देन अगेन दिस डज नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम. तो आप बहुत कम स्पैन के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, बट आप उस चीज़ को फिर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें एक बहुत छोटे पैमाने के ऊपर, बिकॉज until unless you're not gonna ठीक है, make practical use of this information, you're not gonna make a lot of sense ठीक out है, of this. नंबर 3 ये ठीक है है, कि वंस नाउ अगर आपको लगता है कि आपने जो भी थोड़ा बहुत सीखा, आपको मज़ा आया, आपने जो चीज़ इम्प्लीमेंट की, आपको अच्छा लग रहा है, at this point you can perhaps think of changing your profession. Why? Because now you be like कि हाँ, अगर मैं अभी कुछ और कर रहा था, मैं डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ. जो लोग डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे हैं या जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, उनके लिए तो बेहतरीन चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग. Why? Because they have the time, they have the space, they have the opportunity, and they can be making a lot of money. There are a lot of kids in Pakistan, there are a lot of people in Pakistan who from sitting in their home are minting money, and these are people who are doing a lot of good work for Pakistani based clients or international based clients or any other part of the world. You need to have good communication skills. I think good communication skills on digital is a very key point. Why? Because डिजिटल के ऊपर सबसे बड़ा डर क्या होता है कि यार, अगर सामने से एक शख्स मुझे एक चीज़ समझा रहा होता है और अगर वो एक फॉरेन क्लाइंट है, मुझे उसकी बात नहीं समझ आ रही होती कि वो क्या बोल रहा होता है, या तो फिर मेरे अंदर इतनी काबिलियत ना हो कि मैं बोल सकूं कि यार मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, तो मैं किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा अंग्रेज़ी के अंदर.
तो आपकी रिटन कम्युनिकेशन एटलीस्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी ओरल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो अगर आपको डर लगता है अंग्रेजी बोलने में, तो आपकी लिखने में अच्छी होनी चाहिए। वाई? बिकॉज यू कैन ऑल्सो ऑलवेज ईमेल बैक एंड लाइक चैट। If you have good communication skills, that is going to help your digital career a lot. If you have that रिसर्चिंग वाला माइंडसेट कि आप बस चाहते हैं कि अगर आप एक चीज़ के ऊपर रिसर्च करें तो आप घुस जाएं उसके अंदर, आप खो जाएं उसकी दुनिया के अंदर, तो आपके लिए डिजिटल एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारा पैसा कमा लें विदाउट इवन लीविंग योर होम, तो भी डिजिटल बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज बहुत सारे लोग जिनके पास पाकिस्तान के अंदर ये लिमिटेशन होती है, ख़वातीन के पास, वो घर से बाहर नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ problems or a lot of responsibilities. हाँ, So a lot of हाँ, friends that I know who are mothers who are running their digital pages and they are मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप ब्लॉग हाँ, बना लें। आप कुछ ना करें, आप कुछ ना बेचें, आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक ब्लॉग बना लें, यू जस्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग इट एंड यू स्टार्ट इंस्पायरिंग पीपल विद व्हाट यू डू। You that would then one sooner or later become a revenue stream for you. So there are a lot of opportunities on wow, digital, and I feel any person and every wow, person should know digital. Similar to how when computers came, not a lot of people wanted to learn it. Why? Because they were against the idea of computers. But now all of those older people yes, who did not use computer at their earlier younger days now have to learn computer. Why? Because it is the new normal. So similarly, I feel digital would at one point become the new norm, and every person would have to learn it. So if you start oh, early, then you can perhaps be much more ahead of other people in the race. सुपर, थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा कुछ शेयर किया है फरहान, और यहाँ पे आई वुड ऑल्सो लाइक टू नाउ टेक द अपॉर्चुनिटी बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द प्रोग्राम टू अनाउंस दैट Burhan is our now has now become the part of our national board of experts as well. Welcome Burhan on board Mentoring Hub board of experts Thank as you. well. और वो रीजन यही है कि बुरहान, हमारा एक सीरीज है जो हम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं. वी डू इट रेगुलरली every week, and it covers the Monday blues. And so, for the community to know, Burhan की expertise के साथ, we will be covering a lot of marketing blues that we have around in the community, inshallah. Social media हो या traditional marketing हो, हर चीज को लेके all I would really want to say is the fact कि we all need to be very mindful. और जो बुरहान भी बार बार एलिमेंट्स गिनवा रहे थे, वो सारे के सारे माइंडफुल ही रहे. एक और चीज बुरहान, मैं चाहूंगी कि आप जरूर उस पर थोड़ा सा कमेंट करें. वो ये कि देखें, within your transition and think tank digital's transition, I have always known you to be a team lead who has encouraged freshies onto the team, youngsters, वो लोग जो अभी graduate हुए. And it's always been very, very enlightening to see that you have been open to out of the box ideas from your team, which is why I feel कि शायद आप इसलिए you give them a chance to come and become a part of your already set up screen. इसके पीछे आपका क्या I heart है uh, involved? we जरूर please as a share करें. company, we as a company, me and my partners, we always believe in the fact कि आप youngsters को चांस दें, because हम लोग ने भी बहुत young अपना career start किया था, and I've been blessed. Some of the most talented people in my team are youngsters. One of my design lead, he's barely 24, 25, and that guy does such amazing work. I'm so inspired by his work, and I keep on commending him, and I keep on talking to people about it. I think the average age in our workspace, if you keep the partners aside, we're very old. हम तो अब 30 साल के हो गए हैं, but उसके अलावा जो बच्चे हैं वो 23 से 25 साल के हैं, and we Wow. appreciate that. Why? Because youngsters, I feel, have more capacity to learn. They're more Wow. energetic. Digital is a field that involves a lot of I keep on mentioning this point कि dedication चाहिए होती है, बहुत time consuming bit भी होती है और बहुत hassle भी होता है, because हाँ, आपको हाँ, back and forth काम करना है, आपको repetitive दिन के ना 12 घंटे काम करना है, हम घर भी चले जाते हैं तो काम आता रहता है, Facebook आपका खुला हुआ है, emails आ रही हैं आपके पास. So if you start early, you can A, learn a lot, and B, you have the energy to be doing a lot of stuff.
when I was like when I keep talking about this, that when I was early, very young, I had more energy, or मेरा जिससे मैं ज़्यादा sustain कर सकता था, इतना ज़्यादा stress को. अब I feel कि with the passage of time that capacity is also decreasing, but this capacity is on a very high, when you're very young. So yeah, I think if you are young and you want to get into digital, then it's a beautiful domain and platform. Wow. आई थिंक इट ऑलवेज आई थिंक यूर बीइंग टू जैसे आप हमेशा हम्बल भी रहते हैं आई थिंक वो आप बहुत ज्यादा ही माशाल्लाह हम्बल है पर यहाँ पे मैं एक और चीज को ये सवाल मैंने किसी वजह से पूछा और इस वजह से टू एड टू द कम्युनिटी टू द फैक्ट कि देखें दिस इज व्हाट वी नीड all we need is people who can give each other space and time to grow. We all need to make sure कि मैं बार बार बुरहान अपने हर प्रोग्राम के थ्रू यही कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हूँ कि जो कम्युनिटी या जो मुल्क या जो जगह नेशनली हम जिस मार्केट की बात कर रहे हैं हम जो पोटेंशियल क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं हम सोच रहे हैं आज से 5 साल के बाद हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए इस तरीके का मार्केट चाहिए वो सब हम खुद बिल्ड करने वाले हैं सो एवरीबडी एंड एनीबडी who's in this together with us we're all doing it together so we all leave that mark अच्छा यहाँ पे कमेंट्स आते जा रहे थे बुरहान बट डिस्कशन इतना मजेदार चल रहा था आई डिडंट टेक द कमेंट्स सो आई एम रियली सॉरी मैं लूंगी जरूर थोड़े से अली कांच had joined us he's saying sir Burhan Zaka Ali Kanch I'm also going to say is Burhan's partner yes Burhan partner in बिल्कुल crime बिल्कुल yes for TPD बिल्कुल बिल्कुल. Ali he's is also our a head very of good friend strategy. He looks after all our key accounts, and he strategizes a lot of things for us. Zabardast. Or and Shahryar Khan had also joined us, and likewise there were a lot of people who had joined us. अच्छा इसके साथ साथ जो है बुरहान वो ये कि as I just announced the fact that he's now a part of the National Board of Experts. At the same time, now another announcement that we're going to be announcing master classes from Sir Burhan Zaka very very soon, inshallah. And we're going to be doing that before we wrap up this year because we're very close. They're barely 3 months, 3 months down. मेरे ख्याल से अब हम ये साल भी wrap up कर देंगे. So we're going to be bringing master classes to your screens. And जैसे मैंने कहा और जैसे आप लोगों को I'm sure आज की conversation से एहसास हुआ होगा that we are trying to bring to you a master class that's going to teach you what is not taught to you within a book and what does not come to you very easily. ये सिर्फ एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ ही आपको बैठ के मिलेगा जो कि आपको फैक्ट और मिथ का डिस्टिंक्शन समझा सके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पोस्ट कोविड इस वक्त हमें जितना सपोर्ट की जरूरत है ये सब बहुत कम है सो सो व्हाट स्टे ट्यून्ड टू योर स्क्रीन्स बिकॉज वो मास्टर क्लास भी हम जल्दी अनाउंस करेंगे बिफोर we can we move towards okay we have another comment तारिक शाह साहब कह रहे हैं ग्रेट प्रोग्राम उन्होंने भी बड़ा एंजॉय किया है तला अहमद इज आस्किंग इफ वी कुड काइंडली शेयर योर फेसबुक लिंक so they can be in touch okay तला अहमद इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द मास्टर क्लास बिल्कुल ठीक है तला हम इस तरह कर लेंगे कि हम थिंक टैंक डिजिटल के जो कॉन्टैक्ट्स हैं बुरहान इफ इट्स ओके आप शेयर कर लीजिएगा हमारे साथ सो दैट वी कैन शेयर द सेम ऑन आवर पेजेस and also on our YouTube channel जब हम upload करेंगे अपना program before we wrap up Burhan last note that you would want to add and anything that I always say that you've not as yet ever really talked about or said within the community आप please feel free करें कि आप as an advice note as a friendly gesture add in क्या करना चाहते हैं to all these people The who only thing listen that to I you. would like to add is do what makes you happy. Digital makes me happy, so I'm working on it. It's not because I wanted to do it to make money. I'm eventually making money out of it, but it's something that makes me happy, and because of the reason it makes me happy, I stay motivated to do it. If you're just getting into digital because your Chachika beta is also in digital, or your Taika beta has also done his marketing and he's working in a digital agency and he's minting money. If you're doing it for that sake, then this field perhaps is not for you. Uh, and whatever it is, चाहे वो digital हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो कुछ और हो, you should do what makes you happy. And at that point, you for me, work is not work. For me, work is a very
integral and a very imperative part of my life, which I can't overlook a lot of times. And because of the reason that I love my job, I am able to put in those extra hours, and I am able to put in that, like, that एक motivation है कुछ करने की. तो ये चाहत ढूँढें कि आपको आपको ज़िंदगी के अंदर क्या अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ भी हो, और उस चीज़ को करें. एंड यू शुड डू व्हाटएवर यू कैन विदिन व्हाटएवर रिसोर्सेज यू हैव टू कंटिन्यू योर पैशन. वी डिड इट आज से 4 साल पहले, एंड वी माशाल्लाह से हैव अभी भी बहुत बहुत सफ़र है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो 4 साल हुए हैं सिर्फ और सिर्फ. We have a very long way to go, but we started with nothing, and God has been kind to us, and it was just because both of my partners, they love what they do, and three of us, we stay motivated, even when in the most gloomiest of days we always see a एक आपको पता होता है कि आप कहते हो कि नहीं यार खैर है, अगर ये भी हो रहा है, हो जाएगा कुछ ना कुछ. आपके अंदर होप होनी चाहिए. यू शुड नॉट गिव अप. हर बहुत बहुत फेलियर्स होते हैं ज़िंदगी के अंदर, but one of the most beautiful things that you can do from these failures is learn something out of it. There were so many clients that we have faced in our life जिन्होंने हमारे पैसे खा लिए, जिन्होंने पैसे नहीं दिए, जिन्होंने काम करवा के भाग गए. And we have always not looked down on that and be like कि चलो ठीक है यार, किसी ने कुछ ना कुछ सिखाया, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी के साथ काम करेंगे तो हम ज़्यादा प्रॉपर हो जाएंगे. और 4 साल अभी भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे लोग बहुत बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, but we don't give up. Why? Because we know for a fact that if you have a aim in mind, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर एक गोल है, तो वो जो सफ़र है ना, वो बड़ा स्मूथ रोड नहीं होगा, वो बड़ी बम्पी राइड की होगी. कभी स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, कभी गड्ढे आएंगे, कभी लैंड स्लाइडिंग हो जाएगी, बट यू हैव टू स्टे ऑन द रोड, एंड यू हैव टू वेट इट आउट, एंड यू हैव टू इवेंचुअली गो टू दैट गोल. और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसको फिर मोहब्बत से करें, और आप उसको थोड़ा सा दयानतदारी से करने की कोशिश करें. यू शुड नॉट बी थिंकिंग ऑफ डूइंग वर्क फॉर द सेक ऑफ जस्ट मेकिंग मनी, और आप लोगों को पागल बनाएं. बट आप अगर सच्चे होकर काम करेंगे और आप सही तरीक़ेकार अपनाएंगे, तो खुदा भी आपकी बड़ी मदद करेगा और लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा. एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक इम्पॉर्टेंट बिट दैट आई कैन गिव अवे राइट नाउ. Wow. Thank you so much, Burhan, for all of the words of wisdom that you've given away. मैं wrap up से पहले एक दफा मैं जरूर पूछना चाहूंगी, आपको कैसा लगा आज फ्रंट स्क्रीन रह के और बगैर आप डिजाइन करते हैं, आप स्क्रिप्ट करते हैं, आप एडवर्ट माशाल्लाह इतना स्ट्रैटेजी से काम करते हैं. How did you feel today being in the front line? It was a very nice experience. It was a very interesting experience, and I'm looking forward to the master classes and definitely adding something to the community. So are we. So are we. And जैसे मैं पहले कह रही थी बुरहान, we have people who join us from Canada, from the US. मोहम्मद खलीक साहब हैं, वो बहुत रेगुलर वॉच करते हैं हमारे प्रोग्राम. He says very very inspiring session. Thanks to you, and he's also wishing us a lot of good luck with our collaboration, mashallah, on the National Board of Experts. So thank you so much, Khaleek Saab, and everybody who joins us every week. और बाद में जब रीरन चल रहा होता है तो मजे की बात है बुरहान के माशाल्लाह we keep getting reviews and we keep getting feedbacks, and as I always say कि we're not looking for 50 million watch minutes on this, but for the fact कि अगर 50 भी देख रहे हैं, 1000 भी देख रहे हैं, तो वो लोग जिन लोगों की जिंदगी में हम कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकें, इतना कि वो फिर हमें कमेंट करके ये बता सकें कि हाँ we were able to add value to their lives. So thank you so much Burhan. और इसी के साथ साथ जो है वो आज का प्रोग्राम आपके साथ मिलकर मैं रैप अप करूंगी. But before we wrap up, all I would want to say is the fact कि आप लोग जरूर आज एक और चीज को याद रखिएगा कि किस तरह बुरहान ने वापस हमें उसी माइंडफुल जर्नी के तरफ ले गए जो कि बार बार हम जिक्र करते हैं और हम बार बार कहते हैं. We always talk about us pausing, stopping to reflect on how we're moving forward, what ethics are we applying. ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं. और अगर हम देख रहे हैं आगे एक सस्टेनेबल गोल प्लान देख रहे हैं फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ सक्सेस, तो फिर वी हैव टू मेक श्योर कि जो पॉइंटर्स अभी आपको बुरहान ने दिए हैं एज एन एक्सपर्ट, एज ए टीचर, या जो भी विजडम अभी हम इनसे ले सके, ये सब चीजें एक पूरा टूल बॉक्स आपका बनना चाहिए
which is supposed to be your toolbox for life, your toolkit for life. So we're signing off this week from this program. But you guys have to stay tuned for our Cornell University web series with the director tomorrow, which is the Mindful Monday Nuggets, inshallah. And we'll bring you more from Burhan Zaka as an expert on our board. We're flabbergastingly happy about this, Burhan. Thank you so much for your time. Thank you. Thanks for Assalamu having alaikum, me. everybody. Have a great rest of the Sunday that's remaining. Bye bye. Khuda Hafiz.